Hello, good afternoon. Welcome back to the Law Entrance YouTube channel. We are live with another Hindu and Indian Express analysis. How many of you are here with me today? Quickly give me a message in the chat box, and then we shall start. I cannot see your comments. Are you guys there? Okay. Hello, Riddhi. Hi, Rajnandini. Hi, Divyansh. Hi, Aradhya. Hi, Vishal. Good afternoon, all of you. Dia is here. Dhriti is here. Gauravi is here. Okay, good afternoon, everyone. How are you all doing? How's it going for everyone? कैसी चल रही है preparation? Good afternoon, Mishika. Good afternoon, Mukti. We'll wait for one more minute and let more people join in. Till then, आप लोग मुझे ये बताओ, how is current affairs going this week on a scale of 0 to 10? How is it going for you all? Are you guys covering your backlog? Are you still stuck with your backlog? Good afternoon, Mukti. Good afternoon, Tane. See, I remember your name. Good afternoon, Jasmeet. Riddhi is saying 7. Dia says 8. Raj Nandini says 8. Vishal says 7. All right. What about others? How is GK prep going on a scale of 0 to 10? Done with my backlog. Very good. Proud of you. 8. Hi, Samarth. Tanmay is saying 2. इतना क्या खराब हो गया तन्मय कि you gave 2 marks out of 10 to your GK preparation? What's going so wrong? Good afternoon, Achyut. Welcome to the class. All right. Shall we begin? Let's start the class. Most of you have joined in. We have 27 odd people watching us live. Backlog, okay. Backlog हो जाएगा धीरे धीरे clear. Mishika is saying 7 on 10, tired this week. That's okay. Take a break, a small break, get your energy back, and then go full force with your preparation. Good afternoon, Anwar. All right, let's start, guys. I hope my presentation is visible, and I am also visible, and I'm also audible. If yes to all the 3 questions, quickly give me a yes in the chat box. If you can hear me, see me, and my presentation. Yes in the chat box very quickly. Hi, Tanvi. Yes, yes, yes. Okay. All right. Pushkar is here. Adrija is also here. Good to see you guys. चलो ठीक है start करते हैं. Let's start today's class. Today is 16th of August and we are back with another Hindu analysis. All right. It's a Friday and what's up for today's discussion? Let's see that. So firstly, we have an editorial article on welfare schemes in the Hindu newspaper. Then you have a front page article in the Hindu again, solar power installations are related. Then you have AI powered NPSS. What is NPSS? We'll look at that. Can any one of you tell me in the chat box what is NPSS? And then there's a front page article on PM Modi's speech where he mentioned secular code or Uniform Civil Code, which is UCC. We'll talk a little bit about what is that and what is the background behind it. Then, of course, we'll have our vocab.
And this is an important information for you, a special announcement for you, that there's a special strategy session today at 8:30 p.m. on YT live, and it would be conducted by three faculties. I would be one of them. The second person is Amitendra sir, and we have a third person as well who is going to make his debut with you guys on YouTube today itself. And the person is also from Nalsar. So you'll have two people from Nalsar helping you out now. So make sure you tune in at 8:30 p.m. and attend that session. It's going to be a really engaging session with respect to how you can get a major boost if your CLAT mark scores, if your mock scores are stuck in the range of, let's say, 60 to 80. How can you get an extra push of 20 to 25 marks just by attending that particular session? So that is the theme of the session, how to get a massive boost in your marks. So we'll be discussing strategies around that. We'll be discussing subject-wise strategies, and you will also get to meet your new faculty, new mentor as well. So I hope you guys are excited for that. Bring in your friends, bring in all your batchmates, and join in huge numbers. I'm looking forward to seeing you all at 8:30 p.m. And with that, we are ready to start. So this is the reveal for the today's session, 8:30 p.m. session. Gain 25 extra marks. So if you're scoring 70, how to go to 95? If you're scoring 60, how to go to 85? We'll look at that, right? And you can see the new faculty with the hidden face. This face would be revealed very soon, today itself. So stay super excited for that. And as all of you, I hope, know that Race to NLUs is coming this very Sunday, a very special all day multiple session event where we would be talking about tips, tricks, and strategies to improve your score in CLAT, practical hacks to give you an edge in CLAT, how to look at time management, how to look at elimination, how to increase your score, and you have all the session details as well. So it would go on from 9:30 a.m. to 4:30 p.m. And if you haven't registered for this yet, you need to go to lawentrance.com/race to NLU. Race to NLU law entrance सर्च करोगे आपको गूगल पे भी मिल जाएगा. Make sure you register for that ASAP. How many of you have registered for this? Give me a yes or no in the chat box quickly. If you have registered for Race to NLU, give me a yes in the chat box. And if not, give me a no in the chat box. No, Dhriti, he's not my classmate. He's my senior, quite senior to me. Okay, many of you have registered. Riddhi and K-pop haven't registered. What are you guys waiting for? Please make sure you register today itself. It's going to be a very engaging and very interactive event, a very good learning experience. Don't miss out on it. Okay, chalo, theek hai. That's about the upcoming sessions. Let's start with today's class. We have how many people? We have 24 people watching with us. Praval also says no. Praval, kar lo jaldi se enroll, kyunki this is something really special. Okay, so let's talk about our first topic for the day, which is welfare schemes and obstinate refusal to focus on welfare. What is obstinate? Obstinate is stubborn, or ziddi is what we call obstinate. And what is the refusal which we are talking about? It's the refusal by the government to focus on welfare, especially when you look at this year's budget or the annual financial statement. So this is all the article is about. It's talking about how the government is continuously reducing its expenditure on welfare schemes, and how India, which has a lot of population which is marginalized, which is underprivileged, this would be a really bad move for those people, and they would really suffer at the end of this particular measure of reducing their expenditure, reducing the expenditure on the schemes which benefit them. Can you guys name at least one scheme for the poor, or for the below poverty line people, or for marginalized people in the chat box? Any government welfare scheme, central government welfare scheme for marginalized or underprivileged people? Tell me in the chat box. Mukti is saying, can we analyze the paper in detail? Let's cover the first four topics, and then if time permits, we'll definitely cover the paper in detail. Maregaon, Rashi has said Maregaon. It's not Maregaon. I'm hoping that you were trying to write Manrega. Yes, Manrega is there.
Absolutely. Janjatiya scheme is also there. Vishwakarma Yojana is also there. Saubhagya scheme is there. Garib Kalyan Yojana is there. Food security scheme is there. NFSA, National Food Security Act. PM Kusum scheme is also there. Absolutely. PMJ scheme is there. Hmm. PMAY. Pradhan Mantri Awas Yojana, which Riddhi has written in short, PMAY. Yes, that is absolutely correct. NHPS is also there. PMUI. बिल्कुल सही जवाब, बहुत बढ़िया. You guys are well aware of the central schemes. तो जिन लोगों के लिए वो schemes हैं वो लोग चाहे aware हो ना हो, हम as law students तो at least aware हैं. And you should also spread awareness around people who work around you, people who work at your homes. उन सबको बताया करो इन schemes के बारे में. खैर चलो वापस आर्टिकल पे आते हैं. एक बार न्यूज़पेपर पे चल के देखते हैं. What is this article actually talking about? We'll get a gist of it on the newspaper. This article quotes a lot of statistics on how expenditures have been cut down for various schemes. Let's look at it. The union budget has drawn stern criticism from several quarters of the populace for a variety of reasons. On the welfare front, the government has yet again failed to increase expenditure on critical welfare schemes that support the marginalized in the country. Government's obstinate refusal to focus on welfare is perplexing, which means confusing, to say the least, in a country where, according to the government's own data, about 34% of the population survives on less than 100 rupees a day, which is a huge number. 34% is one third se zyada. And over 81 crore people require free food grains to get by. That means if the PDS scheme is not there, if the NFSA scheme is not there, then those people would find it really tough to make their ends meet. They would find it really tough to survive if they do not get food grains from the government. So that is the situation. The NDA now, or the NDA 3.0, continues the trend the alliance set in its two previous terms by reducing welfare allocations as shown in the analysis below on budget papers. So इसमें इन्होंने analysis present किया है कि 2014 में जब NDA गवर्नमेंट आई थी तो बजट में गवर्नमेंट स्कीम्स पे लेट्स से XYZ एक्सपेंडिचर होता था. And with the subsequent government, let's say NDA 2.0, expenditure cut down होके let's say XYZ minus 10% हो गया. Then अभी जब government आई 3.0 फिर और कम हो गया. तो 10% में hypothetical बता रहा था आपको. Let's look at the actual figures. Key welfare schemes and underfunding. Two of the government's biggest welfare schemes, a lot of you mentioned Manrega, which is Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, which is a very, very important scheme for the rural people, for the people who are below poverty line to get employment. Then you have the National Food Security Act, जिसके according आपको food subsidy मिलती है, food grains मिलते हैं as per your public distribution system. And they have seen a budget allocation continuously fall as a share of GDP. Since 2014-15, except for COVID-19 pandemic, when government had to rely on these two schemes to avert a major disaster. तो मनरेगा इन्होंने बताया कि it guarantees 100 days of employment, whereas food subsidy responsible for free food grains for 2/3 of the population. तो ये बता रहे हैं कि NFSA had an expenditure of 0.72% of the GDP last year, whereas this year it has fallen to 0.63% of the GDP. A truly bizarre decision, which means very weird or very strange decision in a country where over 100 crore people cannot afford a healthy diet and less than half of the people get 3 meals a day. So similarly, they have given multiple stats on how vulnerable groups like widows, elderly, and disabled are also below the poverty line, and they are also ignored. इसमें आगे चल के ये भी stats इन्होंने बताए हैं कि जो pension मिलती है to these people, to the widows, to the elderly. I think widows के लिए it's 200 rupees per month, and elderly के लिए I think it's 300 rupees a month. And this has stayed constant since I think 2005-2006. And आप लोगों को पता ही how inflation works. You know, it's been like 17-18 odd years. वो जमाना गए हुए. And the income which they get, the pension which they get is still that 300-200 rupees a month. देखो यहाँ पे लिखा होगा कहीं. The scheme provides paltry, which means very small, very minuscule pensions of 200 a month to the elderly and 300 a month to the widows. An amount that has not increased since 2006, despite repeated requests from dozens of economists. Even at a poverty line of rupees 30 a day, these vulnerable groups would be living at least 66% below the poverty line if left solely to the devices of the state.
सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी कंसर्निंग, क्योंकि अगर जो पॉपुलेशन है उसको जो फूड ग्रेन सप्लाई है, उसको जो फूड सब्सिडी है, उसको जो एम्प्लॉयमेंट है, उसको जो पेंशन है, वो ही अगर बेसिक चीजें नहीं मिलेंगी, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट देम टू ग्रो आउट ऑफ दैट पॉवर्टी? हाउ कैन यू एक्सपेक्ट देम टू गेट earn a living and send their students to get a good education and have a good sustained livelihood, right? तो यही आर्टिकल इस चीज़ों को हाईलाइट कर रहा है कि हाउ देर आर मल्टीपल वेलफेयर एंड न्यूट्रिशन स्कीम्स एज वेल. देयर इज एग्जांपल ऑफ द पोषण स्कीम व्हिच आई कैन सी. देयर इज सक्षम आंगनवाड़ी स्कीम. देयर इज पोषण 2.0 स्कीम. सो दीज स्कीम्स आर रिलेटेड टू चाइल्ड वेलफेयर, हंगर, माल न्यूट्रिशन, एंड इन सारी स्कीम्स में भी देयर हैज बीन अ मेजर रिडक्शन. सी, budget allocated for the same has declined by more than half since 2014-15, from 0.13 of the GDP to 0.06 of the GDP in the recent budget. ये बात हो रही है पोषण अभियान स्कीम की, right? And to address malnutrition and hunger among school-going children, government runs the midday meal program as well. आप लोगों ने नाम सुना होगा इसका, which covers 12 crore children in the country. And despite its success in increasing class attendance as well as nutritional outcomes, the fund meant for your midday meals has halved since 2014-15. तो ये एक कंपैरेटिव हाईलाइट दे रहे हैं कि कैसे एनडीए 1.0, एनडीए 2.0 एंड एनडीए 3.0 में बजटरी एलोकेशन जो है वेलफेयर स्कीम्स के लिए कम होते गए. And in contrast was the UPA era. If the NDA government is serious about its Viksit Bharat dreams, which the government keeps trumpeting about, Viksit Bharat and all of that, then it must realize that the way to develop society is through stomachs and pens of its poorest citizens. No civilized society could be considered developed if a large portion of its population is unable to afford a life of dignity. Perhaps NDA government would do well to follow the example of UPA, which not only saw the introduction of new welfare schemes but also a steady increase in their budget allocations over time. यहाँ पे आपको और भी examples दिए गए of reduction in, let's say, central expenditure of education related schemes, then you have infrastructure related schemes, then you have your health ministry related schemes, then the facts of how the allocation has reduced over time. So this is the article all about, and how welfare has taken a backseat when it comes to NDA 3.0, when it comes to fulfilling promises, when it comes to getting closer to the dream of Viksit Bharat, right? चलो ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं. लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट इन स्टोर. Next, we have an article which is on the first or second page of the newspaper regarding solar power. Digital boost to revive solar power installation scheme. Now, what is this? This is talking about PM Kusum scheme. Now, what is the PM Kusum scheme? Can anyone give me the full form of Kusum in the chat box? What does Kusum stand for? What is PM Kusum scheme? I need the full form of Kusum. काफी भारी भरकम हिंदी वर्ड है, देखते हैं किसको पता है. No one knows? No guesses? किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान. Absolutely correct. So Kusum stands for किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान. Urja is energy, Suraksha is protection, Evam means and, Uthan means development, and Mahabhiyan means initiative. So that is the English translation for people who don't have a strong hold on Hindi. Yes, absolutely correct. सही जवाब सब लोगों का. तो क्या बात हो रही है इस पीएम कुसुम स्कीम के बारे में? What is this PM Kusum scheme about? PM Kusum scheme is about penetration of your solar network, penetration of your solar grids to all the residents of India, to especially the rural people, especially the agricultural people of India. And इस स्कीम का टारगेट था to achieve 100 gigawatt of solar power installation by 2024. And any guesses कि ये स्कीम अब तक कहाँ तक पहुँच पाई है? अभी तक कितना पावर ग्रिड हमने एस्टैब्लिश कर दिया सोलर पावर का? The target was 100 gigawatt by 2024. Any guesses how much we have achieved? What are your guesses? कितना अचीव किया होगा? तुक्का मार सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है.
40। ओके, राजनंदिनी ने सही जवाब दे दिया है, थोड़ा सा गलत है बट ऑलमोस्ट सही है। नो, नॉट 40, नॉट 65, नॉट 30, नॉट 75, 256। 256 गीगावाट या फिर कुछ और? देखो, 1 गीगावाट इज सिंपली 100 मेगावाट, ठीक है, ये कन्वर्जन ध्यान रखना। तो 100 गीगावाट कितने हो गए? सिंपल मैथ्स, 10,000 मेगावाट, है ना। अगर इसमें टाइम लग रहा है आपको तो आपको क्वांट की क्लास डेफिनेटली अटेंड करने की जरूरत है, नहीं लग रहा तो बहुत अच्छी बात है। सो 100 गीगावाट का हमारा टारगेट था बाय 2024, एंड हमने अचीव किया है, अगर इसको हम बोल दें 10,000 मेगावाट का हमारा टारगेट था, तो हमने अचीव किया है 256 मेगावाट आउट ऑफ 10,000 मेगावाट, यानी कि कितना, 5% भी नहीं हुआ ये तो, बहुत कम, ठीक है। तो इस भयानक दृश्य को देखते हुए हमने ये टारगेट एक्सटेंड कर दिया है 2024 से, कब तक, 2026 तक, कि भाई 2 साल और दे दो हमें, फिर हम शायद कर लेंगे। क्या हम कर पाएंगे? आपको लगता है? यस और नो बताओ मुझे चैट बॉक्स में, क्या 2 साल में हो पाएगा? व्हाट डू यू गाइस थिंक? वुड वी बी एबल टू achieve this target in 2 years of 100 gigawatts? Yes, no? No? भरोसा नहीं है आपको गवर्नमेंट पे अपनी? यस, 2.56%, करेक्ट। नो नो, किसी किसी को भरोसा नहीं, 0%। बहुत बढ़िया, बहुत सही, सही है, सही है, वेरी गुड। स्केप्टिकल लोग हो आप, हाँ। चलो, मैं ऑप्टिमिस्ट हूँ, मुझे लगता है हो जाएगा, मैं उम्मीद करता हूँ हो जाए, ठीक है। चलो, तो बात करते हैं थोड़ी सी कुसुम स्कीम की। तो पीएम कुसुम जो स्कीम है उसमें ना सिर्फ 100 गीगावाट अचीव करने की बात कही गई थी सोलर पावर से, यू ऑल्सो हैड टारगेट ऑफ 14 लाख सोलर पंप्स अक्रॉस इंडिया। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, 14 लाख सोलर पंप्स अक्रॉस इंडिया, स्पेशली ये एग्रीकल्चरल और रूरल लोगों के लिए ज़्यादा फोकस्ड है ये स्कीम। एंड दे ऑल्सो had a target of 35 lakh grid connected agricultural pumps. 35 lakh grid connected agricultural pumps. कौन से पंप्स की हम बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट योर सोलर ऑपरेटेड पंप्स, ठीक है। तो ट्यूबवेल्स वगैरह जो भी यूज होते हैं बाय फार्मर्स, वो सबको हमें सोलर पे लेके जाना है। दैट इज व्हाट द इनिशिएटिव ऑफ कुसुम इज ऑल अबाउट, कि जितना भी हमारा एग्रीकल्चरल इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन हो रहा है उसको हम सोलर की तरफ लेके जाएं, एंड लोगों को इंसेंटिवाइज करें कि भाई आप सोलर पे शिफ्ट करो, एंड आप जो एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करोगे उसको आप वापस ग्रिड में भेजो, एंड वी विल पे यू फॉर इट। दैट इज ऑल्सो समथिंग विच वी आर लुकिंग एट, कि भाई आप लोग एनर्जी प्रोडक्शन करो, एंड जब ये इतना टारगेट अचीव कर ले तो फिर आप बाकी ग्रिड में भेजो। यू नीड टू बी ऑब्वियसली कनेक्टेड टू द ग्रिड फॉर दैट। ग्रिड मींस द पावर नेटवर्क, राइट, जिससे आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है उसको ग्रिड कहते हैं, राइट। एंड उस ग्रिड से जब सारे लोग कनेक्टेड होंगे एंड दे आर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी, दे कैन सेंड इट बैक टू द ग्रिड, एंड दैट वुड हेल्प इन द पावर कंजम्पशन ऑफ अदर प्लेसेस एज वेल, ठीक है। तो अब इसमें हर्डल क्या आ रहा है, व्हाट इज द चैलेंज विच वी आर फेसिंग with respect to increasing our solar power penetration network? What do you guys think? What is the roadblock? What is the challenge which we are facing? आपको क्या लगता है, क्यों नहीं कर पा रहे हम सोलर पावर इंस्टॉलेशन जल्दी जल्दी? एनी गेसेस? नो गेसेस? मैं बताऊं? Okay, I'll wait 10 more seconds for your responses. And yes, cost of installation, definitely. Absolutely. It's not exactly related to labor. It's more about installation cost. It's expensive. Staff incapable कह सकते हो. That is one secondary reason, but that's not the primary reason. Lack of initiative by farmers is an important reason. Long bureaucratic process. Bureaucratic process, with respect to getting the subsidy and discounted prices, yes, that is a long bureaucratic process. GIB, what do you mean by GIB? Elaborate, please, Divyaj.
Production, cost of installation, lack of funding. It's not on the production level. It's more about cost of installation and again lack of funding because going through a tedious bureaucratic process. Another important thing is yes, as Mishika said, closed off farmers is one. Another thing is farmers, even if they want to, they do not have the suitable land to put in those large solar grids, because you must have seen that solar panels take a huge amount of space. You need a good chunk of space to generate a massive amount of electricity. तो इतना लैंड नहीं है फार्मर्स के पास कि वो उस पे कल्टीवेशन करने की जगह सोलर पावर ग्रिड्स लगा दें। तो वो अपने फसल उगाएंगे उस पर, खेती करेंगे उस पर, या फिर वो सोलर पावर जनरेट करेंगे उस पर। सो दैट इज द conundrum which they are facing, एंड उस वजह से हम अपने टारगेट्स से बहुत ज्यादा पीछे चल रहे हैं। अच्छा, ग्रेट इंडियन मस्टर्ड नहीं, दैट इज तो जस्ट वन रीजनल इशू है भाई। मैं इंडिया एज अ कंट्री की बात कर रहा था। ग्रेट इंडियन मस्टर्ड को जीआई भी कर दिया, वेरी गुड, नाइस। तो चलो देखते हैं, एक बार ये आर्टिकल चल के देख लेते हैं क्या कह रहा है। बट रफली मैंने आपको बता दिया व्हाट ऑल इट्स टॉकिंग अबाउट, गिव यू द जिस्ट ऑफ इट। लेट्स लुक एट इट। देखो, डिजिटल बूस्ट टू रिवाइव सोलर पावर इंस्टॉलेशन स्कीम विद डिलेज प्लेगिंग द 34,000 crore पीएम कुसुम प्रोग्राम लॉन्च टू बूस्ट सोलर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर इन एग्रीकल्चर. States have begun experimenting with alternative approach to improve adoption. The PM Kusum envisages setting up 100 gigawatt of solar power plants in farmer-owned land, installing 14 lakh solar pumps and solarizing 35 lakh grid-connected agricultural pumps. As of June, only 256 megawatt of power plants, 3.97 lakh of solar pumps, and 13,500 solarized pumps have been installed. Low uptake has forced the government to push the scheme's deadline to 2026, which I told you. Key hurdle in the unavailability of suitable land. Solar power in India has grown to the back of utility scale power projects in Gujarat and Rajasthan, where vast tracts of deserts and uncultivable land are suitable for setting up power plants. तो ये कह रहे हैं कि देखो, राजस्थान और गुजरात में तो लंबे लंबे डेजर्ट्स वाले लैंड है, वहां तो लग सकता है सोलर पावर, उन पे कुछ खेती तो होनी नहीं। बट बाकी जगह का क्या, बाकी जगह दिक्कत आ रही है लैंड की, ठीक है, अनअवेलेबिलिटी ऑफ सुटेबल लैंड. With agricultural land, it is often a challenge to find enough parcels of land that can be pooled together and made available to a power project developer, said this person responsible. The latter is a collaboration of IKEA, the Rockefeller Foundation, Bezos Earth Fund, and this. We have been working with the Rajasthan government for developing a digital platform that uses drone technology to map land parcels. With this, the information that is available to government, often there is little institutional capacity to actually execute projects. तो ये लोग कह रहे हैं कि भाई हम ड्रोन उड़ाएंगे, ड्रोन से आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा सूटेबल लैंड है जहाँ पे आपकी ये सोलर ग्रिड लग सकती है, एंड देन फिर गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करेंगे, फिर गवर्नमेंट उस पर इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन अच्छे से कर पाएगी. The plan is to touch 100 megawatt in 2024, said Mr. Kumar. Plans are afoot to apply this approach in Maharashtra and MP. ठीक है, तो 2024 में देख रहे हो इनका प्लान क्या है, 100 मेगावाट का. ठीक है, तो क्या 2026 तक 100 गीगावाट पहुंच पाएंगे? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है. चलो, नेक्स्ट आर्टिकल भी हमारा यहीं पे है, तो उसकी बात कर लेते हैं. सेंटर लॉन्चेस न्यू AI बेस्ड सर्वेलेंस सिस्टम टू मैनेज पेस्ट, कनेक्ट साइंटिस्ट विद फार्मर्स. तो यहाँ पे बात क्या हो रही है? यहाँ पे बात ये हो रही है कि सेंटर ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सर्वे सिस्टम बनाया है, विच इज कॉल्ड योर NPSS और नेशनल पेस्ट सर्वेलेंस सिस्टम. अब ये पेस्ट सर्वेलेंस सिस्टम क्या करेगा? इसमें बहुत सिंपल फंडा है कि आपके जो फार्मर्स हैं उनको एक पोर्टल का एक्सेस मिलेगा. उस पोर्टल पे वो अपना जो क्रॉप्स हैं, अपनी जो फील्ड है, उसकी फोटोज क्लिक करेंगे, उसको अपलोड करेंगे, एंड वहाँ पे डायरेक्ट उनको एक्सपर्ट्स का, एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स का ओपिनियन मिल जाएगा कि भाई ये क्रॉप्स यहाँ नहीं लगने चाहिए, या ये वाले सीड्स यूज होने चाहिए, या ये वाले पेस्टिसाइड्स यूज होने चाहिए, ये वाले फार्मिसाइड्स यूज होने चाहिए, इसमें ये वाला कीड़ा लग रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. राइट, तो यही सब लिखा है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बैक्ड है, क्योंकि तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो सॉफ्टवेयर है वो भी आइडेंटिफाई कर लेगा कि क्या शॉर्टकमिंग्स हैं, एंड हाउ दे कैन इम्प्रूव देयर यील्ड, हाउ दे कैन इम्प्रूव देयर प्रोडक्शन, एंड हाउ दे कैन मेक फार्मिंग मोर एफिशिएंट. देखो, पढ़ लेते हैं इसको थोड़ा सा. Launching the program, Agricultural Minister Shivraj Singh Chauhan said the aim was to reduce the dependence of farmers on pesticide retailers and to inculcate a scientific approach among them
towards pesticide management. So the primary aim is कि pesticide retailers का involvement कम करना, क्योंकि pesticide retailers को तो अपना profit बनाना है, वो तो pesticide बेचेंगे ही, वो तो कहेंगे 10 तरीके के pesticide लगेंगे, तो वो चीज़ हमें कम करनी है. We have to go to a scientific approach where we move away from the pesticides. The NPSS will analyze latest data using AI, and experts in pest control would help them, releasing system, blah 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 blah. Increasing yield was a priority for Modi government. Farmers need better seeds for increasing productivity. Scientific community is working. Technology should reach the fields. NPSS is such an effort, and it will help in a fast cure, identifying pests and controlling them. Benefit of technology must go to farmers. It would help approximately 14 crore farmers in the country. And farmers can take photos of their infested crops or insects using the system on their phones. This will reach scientific experts. And this would help them cure the diseases. Using correct quantity and correct pesticide at the correct time is the challenge, and the system will help farmers to address this challenge. ठीक है, addressing the problem of using excessive pesticide also, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, curing disease using technology and building confidence among farmers, increasing production, same thing. ठीक है, तो बेसिकली फार्मर्स फोटो खींच के भेजेंगे और उधर से एग्रीकल्चर वाले डॉक्टर साहब, एक्सपर्ट साहब बताएंगे डायग्नोसिस और फार्मर उसको एग्जीक्यूट करेंगे. दैट इज द होल थिंग which is NPSS, right? Okay, I hope this is clear. Pretty simple this was. Let's move to our final topic of the day, which is UCC और यूनिफॉर्म सिविल कोड. तो इसकी बात सबसे फ्रंट हेडलाइन पे थी, because this was mentioned in PM Modi's Independence Day speech. From which place? कहाँ से होती है इंडिपेंडेंस डे की स्पीच? Which historical place? Yes, Dhriti, absolutely correct. Kusum is for farmers and Suryodaya is for rooftop panels. Correct. That is the difference. Both are related to solar energy, but Kusum is specifically for your farmers. ठीक है, रेड फोर्ट एब्सोल्युटली करेक्ट. रेड फोर्ट चांदनी चौक दिल्ली. यस, अरमान ने डिटेल्ड आंसर दे दिया है, थैंक यू फॉर दैट. ओके, तो रेड फोर्ट से पीएम मोदी ने स्पीच दी और उस स्पीच में उन्होंने बात करी यूनिफॉर्म सिविल कोड की. क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन्ड है? डू वी हैव अ मेंशन ऑफ द यूसीसी इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन? इफ यस, देन व्हिच आर्टिकल? एंड इफ नो, देन टेल मी नो. लेट्स सी किसको पता है. Yes, Article 44 DPSP, absolutely correct. Article 44 says that the state would strive to get DPSP in the country. अब DPSP की खास बात कह लो या खराब बात कह लो, ये है कि they are not enforceable. यानी कि you cannot exercise DPSPs as a right. You cannot enforce UCC as a law जब तक वो DPSP है ना. तो उससे रिलेटेड आपको एक रेगुलेशन लाना पड़ेगा, तब जाके आप यूसीसी को इम्प्लीमेंट कर पाओगे. ऐसी कोई जगह है इंडिया में जहाँ पे यूसीसी ऑलरेडी एप्लीकेबल है? एनी प्लेस यू गाइस नो ऑफ वेयर यूसीसी इज इन फोर्स? Yes, UK is one. Uttarakhand, absolutely. Uttarakhand and Goa. Adya has given me the complete answer. Uttarakhand and Goa are the two states where UCC is in place. And UCC से होता क्या है? Simple फंडा है. As the name suggests, Uniform Civil Code. So as you all know that India is a country of diversity. India has a lot of cultures, communities, and religions. तो अब सारे रिलीजन्स के, सारी कम्युनिटीज के अलग अलग नॉर्म्स हैं, अलग अलग कल्चरल वैल्यूज हैं, एंड अलग अलग लॉज भी हैं, अलग अलग कस्टम्स भी हैं. अब व्हेन यू टॉक ऑफ इश्यूज, नॉट इश्यूज, कॉन्सेप्ट्स और टॉपिक्स लाइक मैरिज, अडॉप्शन, या फिर आपका लेट्स से कह लो इनहेरिटेंस, तो इस टाइप के जो आपके टॉपिक्स हैं, इन पे सब लोगों के अलग ओपिनियंस है, सारे रिलीजन्स के अलग लॉज है, सारे रिलीजन्स का अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, लेट्स से.
ठीक है, बीट योर मैरिज, बीट योर अडॉप्शन, बीट डिवोर्स, बीट इनहेरिटेंस, सारे रिलीजन अपने अपने लॉ सबने बना रखे हैं. कैन यू टेल मी द एक्ट विच गवर्न्स हिंदू मैरिजेस and also the law which governs Muslim marriages in the chat box? प्रदीप्ता ने शॉर्ट में लिख दिया है HMA. Yes, the Hindu Marriage Act of 1955. And what legislation or code governs the Muslim law? Yes, Sharia law. मुस्लिम पर्सनल लॉ भी कह सकते हो, शरिया लॉ भी कह सकते हो. ठीक है, तो obviously we all know that both of these legislations are very different from each other, and they have different customs, different practices, but both of these communities, both of these religions live in India. So the debate is always going on कि क्या एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना is a right decision or a wrong decision? Is it going against the spirit of India's diversity, or is it required to bring a uniformity and do away with I don't know, possible practices which are not modern or not relevant, or let's say oppressive in nature, which are violative of fundamental rights to a certain extent? What do you guys think? Should UCC be applied across the country? Yes or no? What is your take on it? Yes. Okay. That's an overwhelming majority for yes. Yes, but major stakeholders must be consulted. देखो, consult करोगे आप stakeholders को, तो they would never come to the same page on getting UCC. I think that's very tough to consult and have a consensus with all the stakeholders. UCC is desirable, but Uttarakhand model is dangerous. Okay. Personal law should be abolished. UCC is good if it covers balances culture and secularism with good consultations. Fair enough. So देखो, there are two sides to this coin. On one side, when you look at the cons, you have a threat to your diversity. You have a threat to your different cultures. It's not just about Hindu culture and Muslim culture or Christian culture or Sikh culture. It's also about a lot of tribal cultures, also about a lot of specific region-based cultures. If you bring in UCC, you would be putting an end to the hundreds or possibly thousands of years of old customs or practices which they have been following. And do you guys think that those people, especially the tribals, would be on page to leaving aside their ongoing customs and their ongoing practices and follow a certain set of rules? There would be definitely a huge hue and cry and outcry, which I personally believe would happen. It would cause a lot of anarchy. Let's see how the government possibly handles it. But that is one thing which is looked at the one side of the coin of implementing UCC. On the other hand of the coin, on the other side of the coin, you have issues of violation of fundamental rights, or let's say not having equality in terms of representation. When you talk of gender representation, when you talk of religious representation, you have multiple cases. You have the Sabrimala case, you have the triple talaq case. All of these boil down to having different religious practices, different religious customs, right? And we know how much hue and cry was created in both of these cases. There are umpteen number of cases which I don't need to remind you of. लेकिन जब हम यूसीसी की बात करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं जिनकी हम बात हमेशा करते हैं. बात इसकी स्टार्ट हुई थी जब मेंटेनेंस की बात करी थी सुप्रीम कोर्ट ने फॉर अ मुस्लिम वाइफ, दैट अ मुस्लिम वाइफ कैन क्लेम मेंटेनेंस अंडर सीआरपीसी. कोई मुझे बता सकता है उस जजमेंट का नाम क्या था? इट्स अ 1985 लैंडमार्क जजमेंट. Yes, exactly. Sabrimala verdict was not even obeyed. So implementation is a big challenge. Shabano case, absolutely. पूरा नाम याद है किसी को? नहीं.
चलो, शाहबानो केस से काम चल जाएगा, वैसे आपका पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है। पूरा नाम वैसे शाहबानो बेगम वर्सेस मोहम्मद अहमद खान, इट्स अ केस ऑफ 1985, ठीक है। तो इसमें कोर्ट ने बोला था कि अ मुस्लिम वुमन हैज अ राइट टू क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम अ हस्बैंड अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी इवन आफ्टर द इद्दत पीरियड हैज एक्सपायर्ड। तो जो मुस्लिम पर्सनल लॉ कहता है, शरिया लॉ कहता है कि इद्दत पीरियड तक तो आप जो है मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हो, बट इद्दत पीरियड के बाद नहीं कर सकते। बट कोर्ट सेड कि नहीं भाई, देखो जो हमारा सीआरपीसी है वो ये हक देता है सारे सिटीजन्स को, एंड इफ यू डू नॉट गिव दिस राइट देन दैट वुड बी अ वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ योर राइट टू इक्वालिटी। यहाँ पे ना दो राइट्स, फंडामेंटल राइट्स क्लैश करती है जब आप यूसीसी की बात करते हो। तो एक तो जैसे हो गई चलो राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, आपको मेंटेनेंस चाहिए अंडर योर फंडामेंटल राइट्स, है ना। दूसरी तरफ एक और हमारी फंडामेंटल राइट है विच गिव्स यू द राइट टू प्रैक्टिस योर रिलीजन, इट गिव्स यू द राइट टू प्रोफेस योर रिलीजन and practice your religious customs. That is also a fundamental right. So how do you resolve the dichotomy or the dilemma between these two fundamental rights? They're clashing with each other, right? एक तरफ आप कह रहे हो इक्वालिटी होनी चाहिए, सेक्युलरिज्म होना चाहिए, दूसरी तरफ आप कह रहे हो सबको अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने का पूरा अधिकार है। तो वो चीजें थोड़ी सी ट्रिकी हैं वहां पे। we'll have to see how the Indian legislation and how Indian judiciary navigates that ट्रबल्ड वाटर्स। बट या कुछ और केसेस की अगर मैं बात करूं तो अभी एक रीसेंट केस था शायरा बानो केस, विच वाज रिगार्डिंग व्हाट मुद्दा, व्हाट वाज द इशू शायरा बानो केस में। अभी मैंने नाम लिया उस इशू का भी। यस, फ्रीडम ऑफ रिलीजन अंडर आर्टिकल 25। यस, ट्रिपल तलाक, शायरा बानो केस वाज द ट्रिपल तलाक केस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो आपको पता होने चाहिए। शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वेयर द सुप्रीम कोर्ट सेड दैट ट्रिपल तलाक इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वायलेटिव ऑफ द डिग्निटी ऑफ अ मुस्लिम वुमन। तो कोर्ट ने बोला कि भाई ये प्रैक्टिस को जो आपको डू अवे करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब ये प्रैक्टिसेस की बात आती है ना, जब भी कोर्ट के पास, चाहे वो सबरीमाला केस हो, चाहे वो आपका ट्रिपल तलाक केस हो, चाहे वो आपका हिजाब केस हो, चाहे वो आपका कोई भी केस हो, तो कोर्ट एक टेस्ट यूज करता है। कैन यू नेम द टेस्ट जिस टेस्ट के बेसिस पे कोर्ट डिसाइड करता है कि ये स्ट्रक डाउन करी जानी चाहिए प्रैक्टिस या नहीं करी जानी चाहिए? एक कीवर्ड है वो जो मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे। यस, मोहम्मद समद वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना इज आल्सो अ लैंडमार्क केस। अब बात करो तो सरला मुदगल इज आल्सो अ लैंडमार्क केस, 1995 का केस है, वेयर हिंदू हस्बैंड कैन नॉट कन्वर्ट टू इस्लाम टू रीमैरी। जैसे इस्लाम में यू कैन हैव 4 मैरिजेस, राइट, यू कैन हैव 4 वाइफ्स, बट हिंदुइज्म में यू कैन नॉट। So you cannot convert to Islam to have more than one wife while you are wedded to your first wife. So you'll have to dissolve your first marriage, then convert, and then remarry. That is the Sarla Mudgal case of 1995. Reasonable proportionality test. You're pretty close. Yes, Dhriti gave me the right answer. It's the essential to the practice of religion. Essential religious practice test is what the court looks at. Ki whether this practice is essential to the, let's say, foundation of your religion, to the practice of your religion. क्या आपका religion आपको practice करने के लिए जो custom है, ये जो practice है, बिल्कुल essential है या फिर नहीं है, ठीक है। So इस basis पे the court decides कि क्या वो प्रैक्टिस स्ट्रक डाउन करी जानी चाहिए या नहीं करी जानी चाहिए। अगर इट्स अ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस तो कोर्ट टेक्स अ लाइटर स्टैंड एंड प्रोबेबली अलाउज द custom to go on because it's an essential religious practice. When if not, then court takes a call based on the constitutional principles, right? हाँ, रीजनेबल प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट तो चलो हर चीज में ही है, दैट इज तो अ कॉमन वे टू लुक एट जजमेंट्स, बट मैं रिलीजन स्पेसिफिक बात कर रहा था कि एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस वाले टेस्ट की मैं बात कर रहा था यहाँ पे। ठीक है, चलो, दैट इज ऑल अबाउट अ डिस्कशन ऑन यूसीसी। आई डोंट थिंक देयर इज much more to discuss when it comes to UCC. We have discussed most of it. Vocabulary कर लेते हैं आज की। So the first vocabulary word for the day is yammer. Yammer मतलब होता है परेशान होना, to express dissatisfaction, pain, resentment, usually tiresome. हाँ, मैं तो थक गई, वैसा वाला, ठीक है। तो synonyms are complain, scream, whine. Antonyms rejoice, delight, tolerate.
Sentence is customers yammered on for what seemed like days about the billing mistake. ठीक है. What do you guys usually yammer about in your day-to-day life? Chat box में मुझे बताओ. The next word is cogent. Cogent मतलब होता है having the power to persuade. ठीक है. Convincing, conclusive, compelling. Antonyms हो गए unconvincing, ineffective, inconclusive. The results of the DNA fingerprinting were the most cogent evidence for acquittal. Acquittal मतलब बाइजर बरी. ठीक है. तो DNA fingerprint से एक conclusive evidence मिल गया for the acquittal. ठीक है. तो that word is cogent. Okay, the third word, the last word for the day is sobriety. Sobriety का मतलब is simply a mental state free of jesting or trifling. Jesting क्या होता है? Jesting is simply joking. ठीक है. Trifling का मतलब भी वही होता है, मस्ती मजाक का मूड. तो अगर आप किसी चीज को लेके एकदम इंटेंट हो, सोबर हो, एकदम फोकस्ड हो, दैट इज यू बीइंग इन सोब्राइटी. इंटेंटनेस, अर्नेस्टनेस, सोबरनेस. ठीक है. ये वो ड्रंक वाला सोबरनेस नहीं है. दिस मींस द सीरियसनेस वाला सोबरनेस. एंड एंटोनिम्स आर फ्रिवलिटी, लेविटी, लाइटनेस. ठीक है. हंसी मजाक, लाइट माहौल. तो उसका एग्जैक्ट उल्टा है कि मूड एकदम लाइट है तो दैट इज फ्रिवलिटी, लेविटी. एंड थोड़ा सीरियस माहौल है, एकदम इंटेंट माहौल है तो सोब्राइटी. ठीक है. शी वॉज अ मॉडल ऑफ सोब्राइटी एंड ऑनेस्टी. ठीक है जी. तो ये हो गए आपके आज के वोकैबुलरी वर्ड्स. फर्स्ट इज सोब्राइटी, सेकंड इज कोजेंट एंड द थर्ड इज यामर. लेट्स लुक एट सम एग्जांपल्स ऑफ yammering in the chat box. Procrastinating, sleep, mock marks, logical नहीं हो रहा, जीके नहीं हो रही, life in general, mock scores. कोई बात नहीं. अब कितने ही दिन रह गए हैं मित्रों? 100, 105 दिन कुछ रह गए, 110 दिन से कम रह गए. Yammer about the Sisyphus like feeling around life right now. Nice. Yammered with my school teachers. बढ़िया. वो तो सब करते हैं, वो तो हक बनता है. चलो, that's all for today's Hindu analysis, guys. If you have any questions, you can feel free to ask. We have a couple of minutes for questions. If not, then that's all for today's class. Thank you so much for attending and participating. Today there would be no 6 p.m. class by Salik sir. We'll meet you directly at 8:30 p.m. in the special session with the special faculty reveal and a very special strategy session on how to get a major boost in your mock scores. So make sure you don't miss it. Set your reminders. Like this particular video and go and like that particular video as well. अभी से like कर दो क्योंकि वीडियो होने वाली है ताबड़तोड़. फैंटास्टिक. ठीक है. चलो मिलते हैं शाम को 8:30 बजे. If you don't have any questions, मेंटी करेंगे यार. मेंटी करते हैं हम मंडे को करते हैं मेंटी. What do you say? Let's do मेंटी on Monday. Everyone up for a मेंटी on Monday? फैकल्टी रिवील हो गई कल की वीडियो में. तो यूट्यूब पे तो नहीं रिवील हुई है, यूट्यूब पे रिवील करेंगे. जिनको पता है वो सस्पेंस बनाए रखो. टॉपिक मंडे के लिए टॉपिक. चलो लेट मी थिंक ऑफ अ टॉपिक. मैं दे देता हूँ आपको. सोच रहा हूँ. आप लोग भी सजेशन दे सकते हो टॉपिक का, वरना कमेंट सेक्शन में तो आप लिखते नहीं हो. इतनी बार मैं बोल चुका. कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताओ क्या टॉपिक चाहिए. Which topic do you guys want? No suggestions? Summits and conferences. चलो मंडे को करते हैं समिट्स, कॉन्फ्रेंसेस एंड इंडेक्सेस. ठीक है. इंडाइसेस कह लो या इंडेक्सेस कह लो. समिट्स, कॉन्फ्रेंसेस एंड इंडाइसेस. डज दैट वर्क फॉर एवरीवन? गिव मी अ यस और नो. इलेक्शन तो कर लिया. साइंस एंड टेक से उतने क्वेश्चंस आते नहीं है. समिट्स एंड इंडेक्स, इंडाइसेस और इंडेक्सेस. ओके चलो ठीक है. डन है फिर. इट्स अ डील. बांग्लादेश कोलकाता सेबी तो वीडियो में कवर करेंगे अलग से. बांग्लादेश तो कवर हो ही चुका है. सेबी केस भी सर कर चुके हैं कवर. ठीक है. चलो सी यू ऑल एट 8:30 p.m. टुडे लाइव अगेन इन अनदर सेशन. बाय बाय. सीआर लॉजिकल के लिए कुछ बताओ. काफी कम मार्क्स आ रहे हैं. आज बताता हूँ शाम को 8:30 बजे. ठीक है. शाम को मिलो. चलो टेक केयर गाइस. बाय बाय. एंडिंग द सेशन हियर. सी यू ऑल इन द इवनिंग.